Good afternoon, dear students. Namaskar. You all are watching Pradhan Mantri eVidya channel number 12 and our YouTube channel NCRT Official. And I am Kusum Prasad. So, dear students, it's a live interactive session and today's session is for class 12 students and the subject is geography. And the topic is water resources and chapter is 6. And to teach this subject, our expert is Shri Kulpreet Singh. Sir, you are welcome in this session. Namaskar, sir. Namaskar. Sir is PGT Geography, Navyug School, Vinay Marg, New Delhi. So, dear students and learners, you can participate in this session because it's a live interactive session and you can also send your feedbacks, any question, any queries to our various mediums. Our mediums are, you can call us on our number that is 8800440559. You can also note down, it's flashing on your TV screen. And you can also email us. The email ID is dth.class12@ciet.nic.in. And apart from this, you can also send your messages, drop your messages on our YouTube channel that is NCRT Official. So these are the various medium where you can send your feedback. So let's move to our expert, Mr. Kulpreet Singh. So let's start today's session and the topic is water resources. Yeah. Good afternoon everybody. Water, we all know that it is a very important resource and most of the availability of water is very crucial. See, there are 4 things that will be covered in this chapter. First thing is the availability, use, then third thing is quality, and the last thing is management. All the 4 things are very important related to the water, availability of water. Now first we start with the water availability of water in India. We all know that India constitutes 2.45% of the total land surface and we have only 4% of the world's total water reserves. We possess nearly 16% of the world's population. Now you can very well see the imbalance between the availability of water and the population size. We have only 4% of water available, whereas the population size is 16%. So this puts enormous pressure on the availability of water. Now if you look at the statistics, out of the total available water, which is around 1869 cubic kilometers, from both the sources we can call them like surface water and groundwater. Out of this we have been able to tap only 60%, that is nearly 1122 cubic kilometers of water. Now let us see what are the various sources that through which the water is available to our country, to our people. First thing is, we broadly classify into 3 categories. One thing is surface water, second thing is groundwater, and the third thing is lagoon or backwater lakes. So first we start with the surface water. Surface water means the water which is available through rivers, lakes, tanks, ponds and other sources on the surface of the earth. This is called surface water. Now this surface water, if we look at the rivers, basically, because if you look at the source from where we get the surface water, they are obtained from 2 sources. One is precipitation, second one is the melting of snow and all that from the mountains, the melting of the glaciers, and they provide waters to these small rivers or large rivers. Now nearly there are 10,360 rivers in our country which has the length of nearly around 1.6 kilometers or above. So these are the prime source, they provide water to the large part of the country. Now this availability of surface water is directly related to the precipitation. The areas which receives higher precipitation tend to have large amount of surface water, whereas the areas which receives less precipitation tend to have less amount of water, surface water available. Now due to this topographical, hydrological and other constraints, we've been able to use only 32% of this available water resources.
like surface water which is available in our country, only 32% has been put to use. Rest of it is yet to be developed. Now, the major rivers, if you look at the three major big rivers that we have, Indus, Ganga and Brahmaputra, they carry nearly 60% of the surface water. Now, we have not been able to use all this 60% of the water which is flown in these rivers. Now, the effective storage has also increased after independence, but still there are certain things like it has raised up to 9%, but still a large amount of water goes waste or unutilized. Second is the groundwater. Groundwater means the water which percolates or seeps down the earth's surface is called the groundwater. The permeable rocks allow the seepage of the water and it goes down. Then it is stored on the impermeable rocks and later on it can be tapped. 60% of it is found in the upper layers of the soil, which can be utilized. We estimate that nearly 434 billion cubic meters of water is stored as underground water. Out of this, we've been able to utilize only 37%. So the distribution of groundwater varies. It is highly uneven. See, it entirely depends upon the structure of the rocks and the configuration of the surface and the rain, availability of rain. So they largely determine the availability of groundwater. Like certain areas, if you look at the northern plains, they have large, vast resources of groundwater, because there the sedimentary soils, they allow the seepage of the water. But the peninsular part and the rocky area, there you have very little availability of groundwater. So the groundwater differs, distribution is highly uneven. Certain areas tend to have higher proportion of groundwater, and whereas peninsular area or mountainous area have very little access to the groundwater. Now, the main use of groundwater is for irrigation. Nearly it is estimated that 3/4 of the groundwater that we utilize or that we extract is used for irrigation purposes, and largely it is used in the northern plains, northern parts of the country. Third source is the lagoon or the backwaters. See, the indented coastline on the western coast of India has developed a large number of natural lakes and lagoons. Now, the water stored in those naturally developed lakes and lagoons can be used for the irrigation purposes or for availability of water in the coastal area. Though this water is little brackish in nature, but it can be used for certain variety of paddy crops and for the cultivation of coconut and other crops. So these are the basically three sources which we can say that they are the one which provide you the water, availability of water on the surface of the earth in our country. Yes, ma'am. Now you can ask. Yes, sir. Water resources के बारे में बात कर रहे थे, sir. It is said that water resources in India are depleting very fast. So what are the factors responsible for this, sir? See, we very well know that the water that is available in our country, it is depleting at a very much faster rate. Now, we would like to analyze the factors what leads to such situation. The first thing is the population growth. The population has been increasing tremendously, and so is the demand for water, because population need water not only for domestic consumption but also for agriculture, for industrial and for various other uses. So with the growth of the population, the demand for water is increasing day by day. Second thing is the change in climate. We have noticed that there is a change in the climate, and this temperature in the climatic conditions have been increasing day by day.
This increase in temperature has led to the melting of the glaciers. The glaciers has been shrinking, with the result that the availability of surface water is decreasing day by day. Third thing is the global warming and the overutilization of groundwater. See, global warming has led to the decrease in the precipitation. This precipitation, decrease in amount of the precipitation that we receive has put enormous pressure on the groundwater resources. So people started extracting groundwater on a large scale, with the result that the water table is going day by day, it is going down. So the net outcome of all these problems is that the water resources that we have in our countries are depleting day by day. Yes, sir. So why the demand of water for irrigation is increasing day by day in India? So what are the reasons? See, irrigation is the key to success of Indian agriculture. Without irrigation, the productivity of the crop hampers, and we mostly utilize this available resources for the irrigation purpose. And now there are certain reasons why we utilize it. See, first thing is the uneven spatial distribution of rainfall. If you look at the distribution of rainfall, you will find that there are certain areas in our country which receives heavy rainfall. On the other hand, there are certain areas which receives very low rainfall. Now we can classify into two categories, the rain deficit areas or rain surplus areas. Now the rain deficit areas tend to have other sources which are to be utilized, like the one which is there in underground water or the various other sources which are available in that area. So rain deficit areas put more utilization of underground water. This is one thing. The irrigation is used for large scale because amount of rainfall available in that area is less. Second thing is uneven temporal distribution of rainfall. See, rainfall is confined only from 3 to 4 months in our country. Rest 8 to 9 months it remains dry. Even in the areas where the rainfall is sufficient, we find that during the dry season, irrigation is used for the cultivation of crops because no water is available during the dry season. So in that puts enormous pressure on the irrigation facilities. Third thing is high rainfall variability. Now the southwest monsoons in India is characterized by high uncertainty. Not only arrival and withdrawal of the monsoon is uncertain, but also its we can say its continuity, rhythm and the intensity also differs. So this variation has put lot of pressure in the areas where the amount is sufficient or in the areas where the amount of rainfall is deficit. Both areas tend to experience this variability. Now it is not necessary that the amount of rainfall or the timings of rainfall is coinciding with the sowing of the crops. They may differ. So the farmers will have to depend upon irrigation, because irrigation they provide security to the agriculture. Then another factor is the nature of the crops. The nature of the crops means like certain varieties of rice, sugarcane and jute, they require large amount of water. And if the amount of rainfall is not sufficient, then the farmers will utilize the irrigation facilities. So along with this, XIV seeds also, like irrigation is one of the most important ingredient of the green revolution. The availability of moisture ensures high productivity. So in case if we are using XIV seeds to increase the production of the crops, we have to depend upon irrigation. Then
even for increasing the productivity, like to meet the growing demand of the population, we need to produce more and more food grains, more and more crops, more and more vegetables, and more food grains. So this entirely depends upon the increasing use of irrigation. So the day by day the use of irrigation is increasing, and so we ensure that the productivity of the crops goes high and the demand for the teeming millions can be met. Yes, ma'am. Yes, sir. So what are the emerging water problems that we are facing today, sir? Like we discussed, there are 4 things. One thing is availability, second thing is the use, third thing is the quality, and the management. These are the 4 things that we discuss related to the water resources. Now, first thing we have seen the availability. Utilization, use is the second thing. Like we have seen this, the irrigation is one of the major use of water resources that are available in our country. Now, there are certain things, like one thing is the wastage of water. This is one such problem. A large amount of water goes waste, and this wastage is to be checked, because the availability of water is limited, is confined to certain areas only. So in that case, we need to check the wastage of the water. Second thing is the deteriorating quality of water. Quality of water is getting deteriorated because of pollution. There are large number of pollutants that are being added to the water, which leads to the deterioration of the quality of water. Quality goes day by day down and down and down. The water gets polluted by certain foreign materials like chemicals, microorganisms, residues of the chemical fertilizers, industrial waste, municipal sewage, and various other things that are thrown into the water, and it gets polluted. Now, this polluted water renders it unfit for the human consumption. We cannot consume it, and the quality suffers because of the large scale pollution almost throughout the country. It is estimated that nearly 3/4 of the surface water is polluted in our country. This is a big problem. Like, water is available, but it is polluted water. Again, this will lead to the diseases and various other problems. Now, India is one such country where we have been using water on, even we can say, like, the polluted water is also being utilized. It is being used because we have no other option. So this is the reason, the problems that we are facing in our country related to the waters. Thank you. Yes, sir. So मैं ये जानना चाहती हूँ, what is watershed management? What is its aim, sir? See, there are techniques, certain techniques, like this is one of the method of conservation of water. Conservation of water means, like, if you see, conservation can be done in 3 steps. First thing is, we should develop water saving technology or techniques or methods which saves the water. Second thing is to prevent the water from getting polluted. Third thing is to develop the watershed management system, or the rainwater harvesting system, or water recycling system. These are some of the methods which are basically developed to ensure the continuous availability of water in future also. So if you look at the watershed development, watershed is basically a geographical area that drains to a common point, and which makes it very much a very ideal planning unit, because it's a small area and can be utilized for the development of water harvesting or water utilization, water saving techniques. And this helps in conserving the soil as well as water, both. The watershed development approach enables a holistic development, because it ensures that not only the water is available, but also the agriculture, horticulture, or social forestry, or even forests can be augmented, can be developed with the help of these
technology, this technique, we can say this method. Now, this watershed development is a very important device to conserve water resources, increasing agriculture production and stop ecological degradation. In this way, we can improve the living condition of the people, where it is like the example of Ralegaon Siddhi, the case study which is there in the book. This Ralegaon Siddhi people, they developed this watershed development, and this has led to the prosperity of the whole village. Even the socio-economic status of the people has changed because of the development of this watershed development. So, that is an example. Like various central government, state government, they have been also supporting, NGOs also, they have been supporting this development of watershed development. Now, what exactly is done in a watershed development? Watershed development means several structures like percolation tanks, dugout ponds, like we call them the Johad, or the check dams, and various other measures, they are adopted, they are constructed so that water can be stored inside those. Watershed development area means basically you look at the watershed development area, during the rainy season plenty of water is available in this area, but when the rain goes during the dry season, no water is available in this area, because it is basically a hilly area and the water flows down the slope. So, in order to ensure that the water is available in this area, certain structures like ponds, dams, artificial dugouts, johar, and structures, they are constructed so that water can be stored in those areas, and later on we can utilize those water in the dry season. So, that way this ensures that the continuity availability of water is there. Yes, sir. So, we want to know that what is rainwater harvesting and how it is an important tool in water management, sir. See, like the watershed management is one method or one technique which ensure that the surface water is available. Rainwater harvesting is another technique or another methodology which ensure that groundwater recharge is there. Because of the shortage of water, surface water, large amount of groundwater is depleted, and there is a mismatch in the recharging of groundwater and the extraction of groundwater. Like the recharging is less and extraction is more, with the result that the groundwater table goes down. So, in order to check that continuously water is available for recharging, we developed certain low cost techniques, and like roof water harvesting, like you have recharging of hand pumps and recharging through the abundant wells and all that. In this, what we do, we simply collect the rainwater, and this rainwater is ultimately stored in the subsurface reservoir that we have developed, and from there the water goes down the slope inside the earth. Basically, it ensures that water gets recharged, the groundwater gets recharged. Now, there are certain advantages, like one thing is this water, which is rainwater, is pure water. It is non-polluted. Non-polluted in the sense the water is pure, no chemicals, no pollution is added to it. And if this goes down the under it, if it goes under the ground to recharge the groundwater, the water, pure water would be there. Second thing is it checks the surface runoff, like the flooding of the drains or roads, and if water goes waste, then this is simply leading to the flooding of the areas. So, that water can be used to recharge the ground's water. So, this ensure, in a way, this is one such techniques where large amount of water can be used for the recharging of the groundwater. Like Tamil Nadu is one such state where it is mandatory for each and every house to harvest the water. Basically, they are
providing small structures like tanks or something like that in each and every house where the rainwater is stored and which can be utilized during the dry season. Thank you. Yes sir, आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ है इस चैप्टर में सर? Then there are certain other things like we can talk about the National Water Policy. National Water Policy 2002. It's basically it talks about the water allocation, which prioritize basically in the following manner. Like the first priority is given to the drinking water. Second thing is irrigation, hydro power, navigation, industrial and other uses. The priority is given to the drinking water. There are three features that are mentioned in this policy, National Water Policy. So, when there is no source of drinking water, irrigation and multi-purpose projects or dams, they should invariably include drinking water component. Like drinking water is very, very important and it should be given the priority. Second thing is provide potable waters to humans and as well as animals. Third thing is the exploitation of groundwater should be stopped and limited by adopting suitable measures. So this water techniques, this basically this National Water Policy, it emphasizes on the availability of ensuring the availability of drinking water to all the people of the country. Yes sir. हम ये देखते हैं कि वाटर काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है आजकल, तो हाउ वी कैन प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन सर? Like pollution, basically if we utilize the water in such a way like so that pollution should not, like factories, you see there are more than 150 factories, leather tanneries which are located on the banks of river Ganga. They all throw their wastewater into the rivers. So if certain techniques are to be adopted, like water should be recycled, reused and recycled. This recycle means it should be treated. Only treated water should be thrown into the rivers. We can utilize, like in urban areas, this treated water, recycled water can be used for gardening and for various other planting the trees and all that. For this can be used for that purpose also. Water, if we throw it into the rivers and all that, the chemical waste and the various it should be segregated. It should be treated and then only it should be added to the rivers and all that. And if it contains large number of pollutants, then this water should not be thrown into the rivers, because rivers, they are the lifelines of the people. They are the one which provide water, drinking water to the people, large amount of people. So if we are throwing water, if we are throwing chemicals, waste and municipal waste into this rivers, this is posing a big threat to the life of the people. So what we need to do, we need to segregate it, we need to recycle it, we need to recheck it, and then only the water should be added. Or if its quality is very much downgraded, then this cannot be, this water can be used for various other purposes, like for industrial cooling purposes or for the firefighting purposes. So various methods can be adopted to check the pollution of the water. So in this chapter it is mentioned Jal Kranti Abhiyan. Yeah. What is this sir? Jal Kranti is the central government's basically a scheme which ensures the availability of water in the rural areas, in all the water deficient areas. Basically it was launched in 2015-16 and it ensures that water is available almost in all the parts of the country. Even the deficient areas where there is very little availability of water, like all the 672 districts, they have identified certain areas, they have marked certain areas, certain villages where their water scarcity is there, and
it is to ensure that water, potable water, drinking water is available in that areas. So government is trying very decent and various other technological innovations also to ensure that the water is available in each and every village of the country. सर वाटर पोल्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और आजकल स्टूडेंट्स को ये पोस्टर एंड ड्राइंग के मीडियम से भी बताया जाता है कि किस तरह से वाटर को पोल्यूशन से बचाएं, और फेस्टिवल सीजन्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को अवेयर करें सर। देखिए, पोल्यूशन एक ऐसा न्यूसेंस है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, और इसके लिए क्या है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इसीलिए इसको चैप्टर में भी एडेड किया गया है। इसको सोशल मीडिया के थ्रू भी, वेरियस अदर मीडियाज़ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हम इसको लोगों तक पहुंचाते हैं। इस मैसेजेस को पहुंचाया जाता है कि वो इंश्योर करें कि लोग इस पॉल्यूशन को दूर रह सकें, इसको दूर कर सकें। पानी के अंदर पॉल्यूशन, लाइक वी हैव सीन, ये एक बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। एयर के अंदर पॉल्यूशन भी हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। चारों तरह का पॉल्यूशन, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन है, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, वो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करता है। हमारी हेल्थ डे बाय डे डाउन होती चली जाती है और बीमारियों बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर उनको चेक करना है, हमको उनको रोकना है, तो अपने आप को पहले, सबसे पहले एनवायरनमेंट को प्योर करना होगा। और एनवायरनमेंट को प्योर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम खुद से पहले पॉल्यूशन करना रोक दें। क्योंकि अगर हम ही पॉल्यूशन को रोकेंगे, अगर हम ही पॉल्यूशन करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट इसको लिए कोई मेथड अडॉप्ट करे या कोई और दूसरी एनजीओ या कोई और सरकारी तंत्र इसको इस समस्या का समाधान निकाले, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें लोगों की अपनी इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से हम इसमें लोगों को समझा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो ये बहुत सारे पेंटिंग कंपटीशंस, ड्राइंग कंपटीशंस या डिबेट एंड बहुत सारे कंपटीशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनका बेसिक पर्पस यही होता है कि अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, लोगों को चारों तरफ ज्ञान दिया जाए, इसके बारे में, इन समस्याओं के बारे में बताया जाए, इनके विभीषण परिणामों के बारे में बताया जाए, ताकि लोग इसको समझ सकें और इस समस्याओं से अपने आप को बचा सकें। जी सर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारे वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड वाटर को ही हमें यूज़ करना है, उसको पॉल्यूट नहीं करना। और जब वो पॉल्यूट हो जाते हैं तो जिसको हमने यूज़ करना होता है वो फिर हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। और क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य होते हैं, उनको इस माध्यम से अवगत करा के हम आगे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, मेन पॉइंट्स अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं और फिर एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज में हमने पहली चीज़ जो पढ़ी वो थी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसमें हमने देखा कि हमारे देश के अंदर करीब करीब 3 मेजर सोर्सेज हैं। एक है सरफेस वाटर, जिसमें कि हम सरफेस के ऊपर जो पानी हमें अवेलेबल होता है। दूसरा हमारे पास है ग्राउंड वाटर, जो कि ज़मीन के नीचे पानी जो स्टोर्ड होता है इम्परमिएबल रॉक्स के ऊपर। दूसरा सोर्स हमारा वो रहा है। और तीसरा सोर्स हमारा रहा है लेक, लेगून्स और बैक वाटर लेक, जिनको हम बोलते हैं। ये कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। हालांकि ये पानी थोड़ा सा ब्रैकिश होता है। ब्रैकिश का मतलब कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा खारा होता है। इसको हम डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे पैडी की कुछ वैरायटीज़ हैं या कोकोनट का कल्टीवेशन वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। 3/4 से भी ज़्यादा, यानी 75% से भी ज़्यादा हमारे पास जो भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इरिगेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो रेनफॉल है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी उसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इरिगेशन इंश्योर करता है कि हमारी जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक हो, और हमारी क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए डिमांड फॉर क्रॉप्स और डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है।
इसलिए इस डिमांड को मीट करने के लिए हम इंश्योर करते हैं कि पानी अवेलेबल रहे ताकि हम तीसरी क्रॉप भी उगा सकें। नॉर्मली हम 2 क्रॉप्स उगाते हैं, रबी और खरीफ। रबी और खरीफ के अलावा ज़ैद को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं उन एरियाज के अंदर जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। और लगभग उत्तरी मैदान, पूरा का पूरा नर्दर्न प्लेन जिसको हम बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये तो सारा का सारा इरिगेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्योंकि रेनफॉल इस एरिया के अंदर कम है। इवन जिन एरियाज के अंदर सफिशिएंट रेनफॉल भी होती है, उन एरियाज में भी हमें इरिगेशन को डेवलप करना पड़ता है। रीजन, क्योंकि वेरिएबिलिटी है, यानी वर्षा केवल 3 या 4 महीने के अंदर है, बाकी 8 से 9 महीने कोई बारिश नहीं है। तो अगर हमें क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है उस एरियाज में भी, उस पीरियड के दौरान भी, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हों। इरिगेशन के बाद हम लोग जो बेसिकली आते हैं वो आते हैं जो हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हो जाता है। जैसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी वेस्टेज। पानी बहुत वेस्ट होता है, जो कि प्रीशियस रिसोर्स है, वेस्ट हो रहा है। अब वेस्ट हो रहा है तो उसको किसी न किसी तरह से उसको चेक करना है। तो सबसे पहली चीज़ इस अवेयरनेस स्प्रेड करने का ये होता है कि हम इस वेस्टेज को चेक करें। सेकेंड थिंग इज पॉल्यूटेड, इट गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं वो अपने एफिलिएंट्स को, जो वेस्ट वाटर है उसको वो रिवर्स के अंदर डाल देती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारा केमिकल रेजिड्यू जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स या इन सब चीज़ों से भी यूटिलाइजेशन के बाद जो बचता है, और इवन म्यूनिसिपल वेस्ट, शहरों के अंदर जो कचरा या गंदगी जनरेट होती है, वो सारी की सारी भी इन रिवर्स के अंदर, पानी के अंदर डाल दी जाती है। तो वो जो है एक तरह का पानी की क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर रहा है। अभी एट प्रेजेंट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से करीब करीब 3/4 हमारे पास जो पानी सरफेस में अवेलेबल है वो पॉल्यूटेड है। अब अगर इतना पॉल्यूटेड वाटर है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पानी जब पीने के लिए आपको पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा तो वो आपको बहुत सारी डिजीज़ या बीमारियां अपने साथ लेकर आएगा। तो इसको चेक करना है, इसको प्योरीफाई करना है। फिर कुछ टेक्निक्स, मेथड्स हमें अडॉप्ट करने हैं, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट है या हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो इंश्योर करे कि पानी की अवेलेबिलिटी लंबे पीरियड्स तक कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे। क्योंकि पानी हम जो यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, इसकी अवेलेबिलिटी लंबे समय तक रहे। हालांकि हमारे पास और ज़्यादा डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज हैं, क्या लाइक अभी हम अगर 60% डेवलपमेंट कर पाए हैं तो बाकी 30% यानी और 10%, 20% प्रोपोर्शनेट और बढ़ाया जा सकता है इसको। लेकिन फिर भी जो अवेलेबल वाटर है, इसको अगर हम अवेयरनेस के थ्रू इसकी पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, इसको चेक कर सकें और इसको सेग्रीगेट कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, ताकि हम पानी को कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल रखें और हमारे पास हमारे एग्रीकल्चर, हमारे दूसरे जो हॉर्टिकल्चर या और जो पानी के ऊपर जो डिपेंडेंट उद्योग या जिनको हम कह सकते हैं काम धंधे हैं, वो इंश्योर रहेंगे, वो कंटिन्यूसली अवेलेबल रहेंगे। इनके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें और थी, जैसे इस चैप्टर के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे एक केस स्टडी थी जिसमें रालेगांव सिद्धि का एक जिक्र आया था। रालेगांव सिद्धि एक महाराष्ट्र का एक विलेज है जिसमें वो कह सकते हैं जो कि अपने वाटरशेड डेवलपमेंट मॉडल के लिए पूरे इंडिया में फेमस हो गया। 1975 में एक छोटा सा गांव था जिसके के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलिसिट लिकर ट्रेडिंग का काम किया करते थे। पुअर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इनकम का कोई अच्छे सोर्सेज नहीं थे, एग्रीकल्चर ना के बराबर था। पानी रेनी सीजन में तो अवेलेबल होता था, लेकिन ड्राई सीजन के अंदर, शुष्क मौसम के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी भी खत्म हो जाती थी। अब वहां एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने इस प्रोजेक्ट को उठाया। उन्होंने इस वाटरशेड डेवलपमेंट एरिया को लोगों को समझाया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई और अपने सारे रिसोर्सेज को उसमें लगाकर उसको डेवलप किया। धीरे धीरे गांव वालों ने भी अपने सारे तरह से उनको अपनी लेबर से और अपने लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से उस पूरे पॉन्ड को डेवलप कर लिया गया।
अब उसकी जो एम्बैंकमेंट वॉल्स बनाई गई थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो पानी को रोक सके, रेन वाटर को। तो उसके लिए गांव वालों ने अपना लेबर, अपनी श्रमदान करके उसकी भी रिपेयरिंग करी। और पहली बार ये हुआ था कि जब ये पॉन्ड पूरे भर गए थे तो उससे जो गांव के 7 कुएं थे, जो विलेजेस के अंदर वेल्स थे, उनके अंदर पानी समर्स में भी अवेलेबल था, यानी ड्राई सीजन में भी पानी अवेलेबल रहा। इससे विलेजर्स का उत्साह और बढ़ गया और उन्होंने इस पूरे मॉडल को बहुत जोर शोर से अडॉप्ट किया। सब लोगों ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया, सब लोगों ने इसके लिए अपनी फिजिकल लेबर और जो भी उनके पास लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज थे उससे इस पूरे एरिया को डेवलप किया। अब क्या था कि एक एग्रीकल्चर उस एरिया में फ्लरिश करने लगा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर फ्लरिश करने लगा तो हॉर्टिकल्चर या सोशल फॉरेस्ट्री वाले और दूसरी एक्टिविटीज जो कि एलाइड एक्टिविटीज जिनको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, वो भी डेवलप करने लगी। वहां के यूथ लोगों ने मिलकर एक तरुण मंडल बनाया और सोशल इविल्स के अगेंस्ट आवाज उठाई। एक न्याय पंचायत बना दी गई जिससे कि कोई भी केस, अगर उनके बीच में कोई आपस में झगड़ा होता है तो पुलिस केस नहीं होगा और वो न्याय पंचायत ही उसको फैसला करेगी। धीरे धीरे ये एक आइडियल विलेज बन गया जिसके अंदर अपने ही रिसोर्सेज को डेवलप करके एक रोल मॉडल की तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने। और इस मॉडल को बहुत से दूसरे गांवों ने भी अडॉप्ट किया। तो रेलेकान सिद्धि का एक केस स्टडी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है जो हमें इंश्योर करती है, बताती है कि किस तरह से अगर हम इस चीज को डेवलप करते हैं, इन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं अपने ही लोकल, उसकी विदाउट गवर्नमेंट की हेल्प या किसी एनजीओ की हेल्प या किसी दूसरी संस्था की मदद के बिना लोगों ने अपने आप इस मॉडल को डेवलप किया, इस गांव को डेवलप किया। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम वाटर कंजर्वेटिव टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करें या रेन वाटरशेड डेवलपमेंट को अडॉप्ट करें, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर को अडॉप्ट करें और इंश्योर करें कि पानी हमें कंटिन्यूसली लंबे समय तक मिलता रहे। सर, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं, जैसे हम आपने स्टार्टिंग में हमें बताया, और हमने ये देखा है कि दिल्ली का जो ग्राउंड लेवल वाटर लेवल है वो भी डाउन जा रहा है काफ़ी। और चैप्टर में मेंशन है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे हाईएस्ट ग्राउंड वाटर लेवल है, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो उसके क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं सर? देखिए, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है रिचार्जिंग के ऊपर, क्योंकि जमीन के नीचे से कोई पानी नहीं बन रहा, पानी सिर्फ वहां स्टोर हो रहा है, पानी ऊपर से ही परकुलेट करके जा रहा है। दिल्ली के एरिया में क्या है, एक तो कंक्रीट का जंगल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। हर जगह हमने अपने शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमने क्या किया, कंक्रीट की पेमेंट्स बना दी, फुटपाथ बना दिए, पार्किंग लॉट्स जो थे वहां पे भी पक्का कर दिया। तो इम्परमेबल रॉक्स हमने ऊपर से एक तरह से सीमेंट की लेयर बिछा दी जिससे कि पानी सीपेज हो ही नहीं रहा। अब जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा। रिचार्जिंग होगा लेकिन वो आसपास के इलाके से होगा और उसको वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दिल्ली के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब है या हरियाणा है या दूसरी स्टेट्स हैं जिनके अंदर रिवर्स का पानी भी अवेलेबल है और रेन भी सफिशिएंट है, तो उससे जो पर्कुलेशन, उनका जो अमाउंट ऑफ पर्कुलेशन वाटर जो है वो ज्यादा है। इस वजह से उनके जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो लगातार रिचार्ज होते रहते हैं और वहां पानी अवेलेबल रहता है। दिल्ली जैसे एरिया में क्या है कि रिचार्जिंग में और एक्सट्रैक्शन में गैप आ रहा है। रिचार्जिंग कम हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, पानी निकाल हम ज्यादा रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी जो सेंट्रल सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक बनाई है, उन्होंने बैन कर दिया है दिल्ली के अंदर कि नए ट्यूबवेल या और दूसरे वेल्स लगाना, ये बैन कर दिया है। रीजन, क्योंकि एक रिचार्जिंग हो नहीं रही और आप एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जब आप एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं तो पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो वो इंश्योर करें कि हम खत्म ना हो और रिचार्जिंग हो, इसलिए प्रॉपर एरियाज, यानी हम उनको प्रॉपर रिचार्जिंग के लिए हमें खुले एरियाज, कुछ कच्चे एरियाज भी छोड़ देने चाहिए जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमारी मदद करें। जी सर, आपने बात करी वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में, तो सर do we think that it can play an important role in sustainable development, sir? Definitely, because it ensures the
continuous availability of water. Watershed development is one such technique where you can ensure that even during the dry season, the water is available. That is available for agriculture, that is available for domestic use, that is available for various other uses also. So, ensuring that the water available during the dry season is basically one of the most we can say the sustainable development method. Like, it ensures that the water is available for longer period of time. Yes, sir. The depleting of water resources may lead to social conflicts and disputes, sir. Yeah. How, sir? See, our country is having a dispute, water dispute, with Bangladesh also, with Pakistan also, and latest this with China also. China is because China is developing a dam on Brahmaputra, so that will reduce the flow of water in Brahmaputra. So that is one such matter where we have raised this question. So there are then in between the states also, this is an international scenario, in between the states also, like Delhi is having a fight, right, an argument with the Haryana also, with Punjab also, Haryana and Punjab also, and then Tamil Nadu and this Karnataka is also having an issue with the Kaveri Jal Vivad. So various states, they are engaged in the conflicts between each and other. Reason, because each and every state want that water should be available, and since the availability of water is limited, so it has to be divided. So that division leads to the confusion, conflicts. People, they want more water, they want their share should be increased. But when you increase the share of one particular state, the share of other state will be reduced. So this will be a problem. So since the availability is limited, so it has to be in a judicious manner. Both the states, they should agree to a consensus that the availability of this much water is there, we can have equal share. So this leads to the lot of conflicts and altercation between the various states and various areas also. Yes, sir. So what can be possible impacts of consumption of contaminated or unclear water on the people? Contaminated water leads to the increase of diseases, like various waterborne disease, cholera, plague and various other diseases that are there. They basically spread and they pose a big threat to the life of the people. Medical expenses and various other hospitalization and all that increases because of the diseases which are carried through the water, like hepatitis B and various other diseases. They are waterborne diseases, they are related to water and they pose a serious threat to the life of the people. So if we have to keep our people safe, free from disease and healthy, then we will have to ensure that this contaminated water should not be available to those people. The water should be purified as far as possible. See, there are natural methods. It is not necessary that we should go for filtration of water through the various filtration processes. There are certain natural processes also which are helpful in purifying the water. We can adopt those also. See, this like we were discussing the rainwater harvesting. Rainwater harvesting is not the first time that we are doing in our country. We have been doing it in ancient period also. Like there are structures still available in our countries like step wells, baulis, kund. A lot of water storage facilities were there even in the ancient period also. And the rulers, they used to ensure that the water is stored in those areas, it remains safe. But nowadays there is a problem, because of the increase in the size of the population. So people have now done away with these resources, or like with artificially stored tanks and all that. So now the government is putting again in reviving those baulis and those storage tanks which ensure that water is available during the dry season also.
ये सर, जाते जाते हमारे जो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हैं, यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू अवर स्टूडेंट्स, एनी मैसेज रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज? इस चैप्टर के पढ़ने के साथ साथ एक सोशल आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी भी है, और वो है कि आप इस मैसेज को स्प्रेड करें कि ये जो हमारा इस चैप्टर को इंक्लूड करने का जो पर्पस है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है. दिस इज बेसिकली टू स्प्रेड अवेयरनेस among the people, so that people should save water, they should adopt certain technologies, adopt certain methods, adopt certain water saving techniques, and they should ensure that water should not get polluted at any cost. पानी को हम किसी भी तरह से polluted ना होने दें, उसको प्रिजर्व करें, उसको कंजर्व करके रखें, और तभी हम अपने देश की प्रॉस्पेरिटी को एग्रीकल्चर की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं. जी सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही बेहतर तरीके से आज का जो चैप्टर हमें बताया. हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमने ये चैप्टर करा वाटर रिसोर्सेज के बारे में. तो आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी आप देख रहे थे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे थे. टॉपिक था वाटर रिसोर्सेज के बारे में. तो हमने जाना और इसे पढ़ा रहे थे. हमारे जो टीचर एक्सपर्ट थे मिस्टर कुलप्रीत सिंह सर बता रहे थे, जो कि पीजीटी ज्योग्राफी नवयुग स्कूल विनयनगर न्यू दिल्ली से हैं. तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे. और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम वाटर है हमारे पास. तो उसी वाटर को आप बचाइए, उसको सेव कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए. सेव वाटर एंड सेव लाइफ. तो आज का सत्र इतना ही. आप देखते रहिए प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल. हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त. नमस्कार.